Hello students, in this video I Abhay Kumar going to solve problem 3 and 4 of chapter 27, a specific heat capacity of gases of Dr. S.C. Verma book, Concepts of Physics Part 2 for class 11 physics and also for IIT JEE, NEET and other plus 2 level entrances. Problem 3 is figure 27E1. Shows a cylindrical container containing oxygen gas gamma equals to 1.4 and closed by a 50 kg frictionless piston. The area of cross section is 100 cm square. That is, area of cross section of the piston is 100 cm square. Atmospheric pressure is 100 kilopascal and a small g. Acceleration due to gravity is 10 meter per second square. The cylinder is slowly heated for some time. Find the amount of heat supplied to the gas if the piston moves out through a distance of 20 cm. फिगर 27E1 में एक कंटेनर है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, सिलिंड्रिकल वेसल है, जिसमें ऑक्सीजन गैस जिसका गामा का वैल्यू 1.4, ऑक्सीजन इज ए डाइएटमिक गैस एंड गामा इक्वल्स टू 1.4 भरी हुई है एंड यह सिलिंड्रिकल कंटेनर 50 kg का एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन इसमें लगा हुआ है, जिसके द्वारा गैस इसमें भरी गई गैस कंटेनर के अंदर भरी हुई ऑक्सीजन गैस बंद है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पिस्टन का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू 100 किलो पास्कल है एंड स्मॉल जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. सिलेंडर को धीरे धीरे गर्म किया जाता है. तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस कैलकुलेट करना है. गैस को दी गई हीट का अमाउंट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. यदि गैस को हीट करने से पिस्टन 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस से ऊपर की ओर मूव करता है. सपोज दिस डिस्टेंस dx मूव्ड बाय द पिस्टन इज 10 cm. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. Mass of the piston is m equals to 50 kg. Area of cross section of the piston का cross section area 100 cm square, that is 100 multiplied by 10 to the power minus 4 meter square. सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to power minus 2 का whole square, that is 1 cm is equal to 10 to power minus 2 meter and 1 cm square is 10 to the power minus 4 meter square, that is 100 cm square is equal to 100 into 10 to power minus 4 meter square, that is we can write it as 100 is 10 square into 10 to power minus 4, that is 10 to power minus 2 meter square. Finally it is 10 to the power minus 2 meter square. And atmospheric pressure is PO equals to PO or PA equals to 100 kilopascal, that is 100 multiplied by 10 to the power 3 pascal, that is 10 to power 4 pascal. 10 to power 5 pascal. 100 multiplied by 10 to power 3, 100 is 10 square multiplied by 10 to power 3, that is 10 square into 10 to the power 3, that is 10 to power 5 pascal. PA. Symbol of Pascal is PA, capital P, a small a. A small g is given 10 meter per second square. We have to calculate, we have to find amount of heat supplied to the gas, that is dq. dq is equal to what? Amount of heat supplied to the gas, say it is dq is equal to what? First of all, we have to calculate increase in temperature of the gas. जब सिलेंडर के अंदर सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर रखी हुई गैस ऑक्सीजन गैस को, जिसका कि गामा का वैल्यू दिया हुआ है 1.4, गामा इज ऑल्सो गिवन 1.4 और ऑक्सीजन गैस. तो
जब बाहर से हीट सप्लाई किया जाता है, सपोज किया जाए कि इस सिलिंड्रिकल वेसल और सिलिंड्रिकल कंटेनर को बेस को हीट किया जाता है, जिससे कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस है उसको हीट सप्लाई होगा, उस अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस DQ मालूम करना है। और इस हीट सप्लाई के कारण क्योंकि कुछ देर तक ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर के अंदर गर्म किया जाता है, तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इस टेम्परेचर बढ़ने के कारण गैस एक्सपेंड करेगा, तो गैस के द्वारा वर्क डन होगा। जो टोटल प्रेशर है इस सिलेंडर के अंदर गैस का, वह प्रेशर कितना होगा? वह प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस पिस्टन का वेट के कारण भी प्रेशर गैस पर एक्ट करेगा, तो पिस्टन का वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा। सो प्रेशर एक्टिंग ऑन द गैस, ऑक्सीजन गैस inside the vessel, cylindrical vessel, due to the weight of the cylinder is pressure is equal to force by area, so it is mg upon A. Pressure acting on the gas due to weight of the piston, or is pressure of the piston applied on the gas is mg upon A. Since pressure is फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द पिस्टन, क्योंकि पिस्टन का मास भी दिया है 50 kg, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन का ये दिया हुआ है, तो इस पिस्टन के कारण जो प्रेशर गैस पर एग्जर्ट होगा, अप्लाई होगा, वह कितना होगा? mg अपॉन A। सो टोटल जो प्रेशर होगा सिलेंडर के अंदर, सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर ऑक्सीजन गैस पर, वह एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर होगा ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस mg अपॉन A। लेकिन जब गैस को हीट किया जाएगा तो ये टोटल प्रेशर के अगेंस्ट में यह पिस्टन 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस से ऊपर मूव करेगा। सो वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट इज वर्क डन बाय द ऑक्सीजन गैस इज गिवन बाय यूजिंग द फार्मूला dW इक्वल्स टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम dV, एंड वी कैन राइट PdV एज, सिंस PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स of a gas, where the gas is oxygen gas, so PV is equal to nRT, therefore at constant pressure P is taken constant, and after differentiating it, P into dV equals to nR into dt. So PdV, in place of PdV we can write nR into dt. अब यहाँ से हम dt कैलकुलेट कर सकते हैं, therefore dt equal to, dt rise in temperature of the gas, rise in temperature of oxygen gas, O2 gas is dt equals to P multiplied by pressure multiplied by increase in volume dV, and in place of dV we can write area into distance moved by the piston. So in place of PdV it is P into, in place of dV we can write A into dx divided by n, small n, number of moles of the gas, oxygen gas, into gas constant R. Now it is given total pressure P acting on the gas, that is atmospheric pressure, and pressure due to the weight of the piston, that is force. Weight of the piston is the force acting is mass into acceleration due to gravity mg upon area, so mg upon area is pressure. So pressure due to the weight of the piston is mg upon A. So total pressure acting on the gas is PO plus mg upon A. So pressure is PO plus mg plus A. In place of P we can write net pressure PO plus net pressure P is equal to PO plus mg by A. So it is, in place of P we can write PO plus mg upon A multiplied by A into dx upon n into R, and value of PO is given. Atmospheric pressure is 100 kilopascal, that is 100 into 10 to the power 3, that is 10 to the power 5 pascal, 1 into 10 to the power 5 pascal, 10 to the power 5 plus m. Mass of the piston is 50 kg, so it is 50 multiplied by g is 10 upon area of the piston,
is 100 cm square, that is 100 into 10 to the power minus 4 meter square, that is 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2, bracket closed, multiplied by area. Area of the piston is again 10 to the power minus 2 out of the bracket, multiplied by distance moved by the piston is 20 cm. Dx is equal to, it is also given, dx movement of the piston. Piston moves up after the gas expands after heating. जब गैस को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो गैस एक्सपेंड करेगा, तो पिस्टन ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर से ऊपर की ओर 20 सेंटीमीटर. पिस्टन का जो मूवमेंट है नॉट 10 cm, इट इज 20 cm. तो पिस्टन का मूवमेंट 20 cm है, दैट इज 20 multiplied by 10 to the power minus 2 meter, that is 20 by 100. 20 upon 10 to the power minus 2 meter, that is 0.2 meter. It is 0.2 meter. So in place of dx we can write 0.2 upon n, small n into capital R. And it is inside the bracket, it is 10 to the power 5 plus 15 to 10, that is 500 upon 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2, numerator में जाके plus 2 हो जाएगा. So it is 500 multiplied by 10 to the power plus 2. So 500 multiplied by 100, that is 5 into 10 to the power 4. And outside the bracket it is 10 to the power minus 2 into 0.2, that is 2 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 3. After calculation we can find the value of the terms in the numerator of RHS is numerator of RHS is 300. So it is 300. Therefore, rise in temperature of the gas is dT equals to, it is 300 upon nR. Suppose it is equation number 1. Now we have to calculate heat supplied to the gas. So using the formula for heat supplied to the gas at constant pressure is dq is equal to n into Cp multiplied by dt. N into Cp multiplied by dt. A specific heat capacity of the gas at constant pressure is a small Cp, or we can write it as Sp also. So dq equals to, now we have amount of heat supplied to the gas is given by dq. dq equals to, therefore dq is equal to, it is heat supplied to the gas at constant pressure, that is n multiplied by Cp multiplied by dt. Value of dt is 300 upon nr. So it is now n is the number of moles of the gas. N is the number of moles of the gas. So it is n multiplied by Cp, and value of Cp, a specific heat capacity of the gas at constant pressure, is after using the formula Cp minus Cv equals to capital R, and Cp by Cv is equal to gamma. We can find the value of Cp as gamma R upon gamma minus 1. So value of Cp is gamma capital R upon gamma minus 1 multiplied by dt. Value of dt in equation 1 we have already obtained. dt का value, rise in temperature का value कितना है, dt equals to 300 upon nr. So dt का value रख दिया जाए 300 after substituting the value of dt from 1, that is dt is equal to 300 upon nr. 300 upon nr. Numerator में n, denominator में भी n है, will cancel out. Capital R and capital R will also cancel out in the numerator and denominator. तो numerator and denominator में n, small n and capital R cancel हो गए, इसलिए we will left with 300 upon gamma minus gamma
300 into gamma, 300 multiplied by gamma upon gamma minus 1. The value of gamma is also given. It is 1.4 ऑक्सीजन गैस के लिए, जो कि डाइट में गैस है, गामा का वैल्यू 1.4 प्रॉब्लम में दिया गया है. It is given in the problem. The value of gamma for oxygen gas is 1.4. So in place of gamma we can write 1.4. So heat supplied to the gas dq equals to 300 multiplied by 1.4 upon gamma is, in the numerator it is gamma minus 1. So it is 1.4 minus 1, that is 300 multiplied by 1.4 upon 1.4 minus 1 is 0.4. 0.4 and 1.4 वन प्लेस पर डिसिमल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बोथ विल कैंसिल आउट. सो पॉइंट कैंसिल हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. सो वी विल लेफ्ट विथ नाउ एंड नाउ इन द डिनोमिनेटर इट इज 4. अब पॉइंट के कैंसिलेशन के बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1.4 एंड 0.4 के पॉइंट्स के कैंसिलेशन के बाद 300 कैंसिल हो जाएगा 4 से, दैट इज 75. And after multiplying 75 and 14, we will get the result, and this result is 1050 joule. So dq equals to amount of heat supplying to the gas is 1050 joule. Answer. Problem 4 is the specific heat capacities of hydrogen at constant volume and at constant pressure are 2.4 calorie upon gram degree centigrade and 3.4 calorie upon gram degree centigrade respectively. The molecular weight of hydrogen is 2 gram upon mole, that is 2 gram per mole, and the gas constant capital R equals to 8.3 into 10 to the power 7 erg per mole per degree centigrade, that is erg upon mole degree centigrade. Calculate the value of capital J, that is mechanical equivalent of heat. इस प्रॉब्लम में हाइड्रोजन गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज SV equals to 2.4 calorie upon gram डिग्री सेंटीग्रेड, एंड कांस्टेंट प्रेशर पर H2 गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर SP इक्वल्स टू 3.4 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है. मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 ग्राम पर मोल है, दैट इज हाइड्रोजन के एक मोल का मास 2 ग्राम है. सिंबल ऑफ मोलिकुलर वेट इज कैपिटल M इक्वल्स टू 2 ग्राम अपॉन मोल, 2 ग्राम पर मोल मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन. एंड गैस कांस्टेंट कैपिटल R का वैल्यू भी दिया गया है 8.3 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग अपॉन मोल डिग्री सेंटीग्रेड equals to 8.3 joule per mole, that is 10 to power 7 erg is equal to 1 joule. So it is 8.3 into 10 to power 7 erg upon mole degree centigrade can be written as 8.3 joule upon mole degree centigrade. Since a 1 joule 1 joule is 10 to power 7 erg or 10 to power 7 erg is 1 joule. SI में now we have to calculate the value of J, capital J, that is mechanical equivalent of heat. So we have to find the value of capital J. Now molar specific heat capacity of the gas, that is hydrogen gas, at constant pressure is given by the symbol कैपिटल C, सफिक्स में P है, Cp इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन M मल्टीप्लाइड बाई
a specific heat capacity of hydrogen at constant pressure, that is Sp. A specific heat capacity of a gas, or in this case hydrogen gas at constant pressure को it can also be noted by the symbol Cp, a small c suffix में p दे करके. तो Sp की जगह Cp सिंबल से भी, स्मॉल Cp सिंबल से भी डिनोट किया जा सकता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर. So Cp, molar specific heat capacity of hydrogen at constant pressure, that is capital C, suffix में p है. Cp equals to molecular weight of hydrogen multiplied by Sp, and m is equal to 2 gram per mole molecular weight of hydrogen. So in place of capital M we can write 2 gram per mole multiplied by Sp. Sp is given, a specific heat capacity of hydrogen at constant pressure is 3.4 calorie upon gram degree centigrade. So 2 into 3 point, Sp value of Sp is 3.4 calorie upon gram degree centigrade. That is 2 into 3.4 is 6.8, and now it is calorie in place of gram. Now it is calorie per mole, calorie upon mole degree centigrade. That is calorie per mole per degree centigrade. And Cp, molar specific heat of hydrogen at constant volume, is denoted by the symbol capital C, suffix में v है. Cv equals to m multiplied by Sv. Sv, the specific heat capacity of hydrogen at constant volume. Molecular weight of hydrogen is 2 gram per mole, that is 2 multiplied by Sv is given 2.4 calorie per gram per degree centigrade. Now it is 2 into 2.4 is 4.8, and now it is calorie per mole per degree centigrade, or calorie upon mole degree centigrade. Now we know the Mayer's formula, which is Cp minus Cv is equal to R. So difference of Cp minus Cv equals to capital R. In LHS, Cp equals to 6.8 calorie per mole, calorie upon mole degree centigrade. So it is 6.8 calorie upon mole degree centigrade, minus Cv is 4.8 calorie upon mole degree centigrade, and in RHS it is capital R, gas constant, and value of capital R is also given, that is 8.3 into 10 to the power 7 erg upon mole degree centigrade, that is 8.3 joule in SI system. 10 to the power 7 erg is equal to 1 joule, so it is 8.3 joule per mole, 8.3 joule upon mole degree centigrade, or 8.3 joule per mole per degree centigrade. So it is RHS is value of R is given 8.3 joule upon mole degree centigrade. LHS is 6.8 calorie upon mole degree centigrade minus 4.8 value of Cv, calorie per mole per degree centigrade, or calorie upon mole degree centigrade. Difference is 6.8 minus 4.8. It is 2 calorie upon mole degree centigrade, and it is equal to or equivalent to 8.3 joule upon mole degree centigrade. So we have to find the value of mechanical equivalent of heat. Since mechanical equivalent of heat J equals to जूल अपॉन रेशियो ऑफ जूल अपॉन कैलोरी, तो आरएचएस में जूल है, एलएचएस में कैलोरी है, तो 8.3 से एलएचएस का जो वैल्यू है सीपी माइनस सीवी का 2 कैलोरी अपॉन मोल डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आरएचएस में जो गिवन वैल्यू है 8.3 इंटू 10 टू पावर 7 कैलोरी, जिसे हमने 8.3 जूल अपॉन मोल डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में एक्सप्रेस किया। तो यह जो वैल्यू है आरएचएस में वह जूल के रूप में है, तो यह जूल अपॉन कैलोरी का जो रेशियो होता है वह मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है।
Therefore, hence we have J equals to mechanical equivalent of heat. J equals to 8.3 जूल में डिवाइड कर देंगे 2 कैलोरी, that is 8.3 upon 2, and unit will be जूल पर कैलोरी, and 8.3 से में 2 से डिवाइड किया जाए तो इट इज 2 4 जा 8, that is 4 point, now 2 1 जा 2, 3 है 1 टाइम्स एक बार जाएगा, एंड 1 बचेगा, that is 15, 4.15, that is 2 multiplied by 5 is 10, so it is 4.15 joule per calorie answer. This is the mechanical equivalent of heat, which is denoted by the symbol J, which is equal to joule upon calorie. तो 8.3 जूल है RHS में, R का कैपिटल R का वैल्यू एंड CP माइनस CV का जो वैल्यू है डिफरेंस, वह जो कि R कैपिटल R की इक्वल होता है वह 2 कैलोरी, वह 2 कैलोरी है, मतलब 2 कैलोरी पर 2 कैलोरी अपॉन मोल डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड RHS में 8.3 जूल अपॉन मोल डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जूल में 8.3 जूल में 2 कैलोरी से डिवाइड करने पर जूल पर कैलोरी J का वैल्यू, that is 4.15 joule per calorie answer. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel PHY Quantum classes.